So, hello everyone. Let's see our first question. It says from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree. So, find the height of the tower. Okay, तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं क्या हमें गिवन है क्या नहीं है. ओके सो हमें दो टावर गिवन है. इसको लेबल करते हैं फिगर को ए बी. लेट्स से दिस इज सी and this D and this is E. So there are two towers AB and EC and EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें बोल रखा है कि AB is 7 and since AD is parallel to BC तो DCB क्या होगा 7 यूनिट्स होगा. ऑल्सो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इस टावर से इसके टॉप तक का वो है 60 डिग्री एंड डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री का. सो हम यहाँ पर एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे पूरे क्वेश्चन में that in any triangle tan theta equals to height upon base. Okay, so let's consider in triangle ADE we apply tan 60 degree equals to again height upon base. It will give us DE upon DA. DE upon DA. Okay, now हम यहाँ पर DE की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो DE equals to क्या आएगा 10 60 degree multiplied by DA. Let's say this is equation number 1. Okay, now let's take in triangle ADE. Okay, in triangle ADC. Okay, we use again 10 30 degree equals to again height upon base. So DC and upon DA. DC upon DA. Okay. However, DC is 7 units. So substituting it, it will give us tan 30 degree equals to 7 divided by DA, which will give us the value of DA, and it is 7 upon 10 30 degree. 7 upon 10 30 degree. Let's say this is equation number 2. Now, from equations 1 and 2, we get the value of DE. How? We have DE in first equation tan 60 degree multiplied by DA and in second equation हमारे पास DA की वैल्यू आ चुकी है. तो क्यों ना हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इन फर्स्ट इक्वेशन में. ओके, सो हमारे पास ई सी की वैल्यू आ जाएगी tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 degree multiplied by 7, right? But tan 60 degree is root 3 and tan 30 degree is 1 by root 3, जो root 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, multiplied by 7, and root 3 will root 3 give us 3 multiplied by 7 equals to 21 units. Okay, but this is not the height of the tower. This is only okay, this is ED, right? ED, I forgot, sorry about that. So the height of the tower is EC. You have to find EC, which is equals to ED plus DC, and ED is 21 units. So EC will give us 21 plus 7 equals to 28 units as the answer of the first question. Okay, now let's see question number 2. Question number 2 says
A toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base radius as that of the hemisphere, and its volume is 2 by 3 of the volume of the hemisphere. Okay, calculate the height of the cone and the surface area of the toy. Use pi equals to 22 by 7. ओके, इसमें भी हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. हमें एक हेमिस्फेयर दे रखा हुआ है सरमाउंटेड बाय कोन, राइट? और let's say this is a common point of both the figure and this is the common radius, let's say r, and this is the height of the cone. So h represents the height of the cone and r represents the common radius, and this is the slant height of the cone, also called L. Okay, so we have given volume of cone is what equals to 2 by 3 times of the volume of hemisphere, right? However, it implies वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हम इसकी वैल्यू जल्दी से इनपुट कर देते हैं एंड इट विल गिव अस 2/3. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट 2/3 पाई आर क्यूब, राइट? ओके, ओके, सो अभी 3 will cancel out 3 and pi will cancel out pi, and r square will become here -2. Okay, so what we have remained with, we get h equals to 4/3 r. However, r जो हमें given है वो है 21 centimeter. So it will give us 3 multiplied by 7 is 21. So it will give us height of the cone as 28 centimeter. Now before finding the total surface area of this whole figure, I would like to find the value of L, because you will know about it later. So as we can see in cone, this is a right angle triangle, right angle at here. Now using Pythagoras theorem, we get hypotenuse का square equals to h square plus r square. Okay. Also, we can say that L is equals to under root of h square plus r square. Now h we have already find that it is 28 का square, r is given 21 का square. So 28 का square क्या देगा हमें? 28 का square is 784 and 21 का square as we know 441. It will give us the value 1225, and this is the square root of 35. So we can say that L equals to 35 centimeter. So we have h 28 centimeter, L 35 centimeter, r is 21 centimeter. Now we will find the total surface area of the figure. Total surface area क्या होगा? Curved surface area of cone plus curved surface area of the hemisphere, right? Now curved surface area क्या होता है? The area जो air के contact में. तो curved surface area of cone क्या होता है? Pi r L plus curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. यहाँ से हम लोगों को पाई आर कॉमन ले लेना है और we remain in the brackets 2r. Now putting the value of r, L and pi, what we get? We get it's 22 by 7 and this is r 21. So 3 into 22 and L की वैल्यू क्या है 35 and 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r is 42.
21 into 2. So it will give us 66 multiplied by 77. And the answer is 5082 centimeter square. This is the answer to the second question. Okay, let's see the third question. Third question says prove the following. Tan A divided by 1 minus cot A plus second term cot A divided by 1 minus tan A equals to 1 plus tan A plus cot A. So this question has left hand side and right hand side. So I will consider first its left hand side. Okay, its left hand side says tan A divided by 1 minus cot A, okay, plus cot A divided by 1 minus tan A. This is his left hand side. Now cot A की वैल्यू 1 अपॉन tan A होती है, तो जब मैं tan A में लिख सकता हूँ cot A को, तो क्यों ना लिखा जाए, पूरी एक्सप्रेशन को एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना चाहता हूँ, तो cot A को जब हम tan A में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल गिव अस 1 अपॉन tan A एंड देन डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे तो न्यूमिनेटर में tan A मल्टीप्लाई होगा. आई होप यू गेट इट. tan स्क्वायर A हो जाएगा यहाँ और नीचे हमें मिलेगा tan A minus 1. ओके, दिस इज 1 अपॉन tan A हो जाएगा और tan A का हम एलसीएम लेंगे तो tan A minus 1 एंड tan A ऊपर चला जाएगा. सिमिलरली cot A की जगह हम यहाँ पर 1 अपॉन tan A पुट करेंगे, 1 अपॉन tan A and denominator is same, that is 1 minus tan A. Now what we are going to do is we are going to similarize the denominator of both the terms. यहाँ पर हमें tan A minus 1 दे रखा है, यहाँ 1 minus tan A ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस माइनस का डिफरेंस है. तो यहाँ tan A है लेकिन यहाँ tan A नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे tan A से. तो tan A से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बिकम क्यूब एंड दिस विल बिकम इन द डिनोमिनेटर tan A, राइट. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है एंड में. सो दिस विल बिकम tan cube A divided by tan A times tan A minus 1. नाउ हम इस डिनोमिनेटर में से 1 माइनस tan A से माइनस कॉमन लेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि हमें tan A minus 1 इस फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में दे रखा हुआ है. तो दिस विल बिकम 1 अपॉन tan A times tan A minus 1. Okay, now tan A minus 1 is common, so we will take it as common. We will get 1 upon tan A times tan A minus 1 as common. So we will get here tan cube A minus 1 cube. Now this is the identity of A cube minus B cube. So we know that A cube minus B cube is equals to A minus B times A square plus B square plus AB, right? Okay, so using this identity here we will get A cube minus B cube as tan A minus 1, wait, tan A minus 1 A minus B and A square plus B square plus AB in the numerator, and in denominator we are remain with tan A times
tan a minus 1. नाउ यू आर वंडरिंग कि हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, तो व्हाई डोंट वी कैंसिल देम आउट? ओके, सो this will make us happy, right? So we are going in the right path, it indicated. So this will give us, now tan a जो डिवाइड है उसे हम इस ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंड कर देंगे, तो हमें tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय tan a मिलेगा, tan a प्लस 1 divided by tan a is cot a, right? And the term which is we are waiting for, tan a divided by tan a is 1. So we will get the right hand side. This is right hand side of this quotient. Okay, so left hand side equals right hand side of this quotient, hence proved. So this is the solution of the third question. I hope this answered your question.